بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. There are some who are fond of history and travel to consult old books of history whenever they may find them. Such people had better devote themselves to the study of the Quran, in which they will find an equivalent to all the books that are admitted to be the most authoritative on the past ages. If you want to acquire such a lofty status that even prophets be commanded to sit in your company and participate in your gathering, then you can do so through the Holy Quran. If you are so lazy that you cannot apply yourself to hard work, even that you can earn an honorable status without any labor by means of the glorious Quran, then you should sit down and keep on listening silently to children reciting the Quran in a school. Thereby you shall earn a lot of reward without any hard work on your part. If you are fond of variety, you can find it in various ideas and different subjects of the Holy Quran, some dealing with mercy, others with chastisement, some relating to different stories, and others to various commandments, and so on. You can also change your mode of recitation, low at times and loud at others. See Hadith 31. If your sins have passed all limits and you believe you are to die one day, then Hadith 32 to 34 will exhort you to lose no time and start recitation of the Quran, because you can never find such an influential intercessor whose intercession is certain to be accepted. On the other hand, if you are very respectful and your sense of respect and honor makes you avoid disputes with quarrelsome people, even at the cost of your valuable rights, you should try to avoid dispute with the Quran on the Day of Judgment, when it will be the strongest complaint, whose contention will be upheld and there will be nobody to defend the respondent. If you are in need of a guide who would lead you to the house of your beloved, and one would pay any price for such a guidance, then you should take to recitation of the Holy Quran. Again, if you want to safeguard yourself against imprisonment, you have no way out except recitation of the glorious Quran. If you want to acquire the knowledge of the prophets and you are its devotee, then Hadith number 5, which was recited, shows that you can specialize in it through the study of the Quran. Similarly, if you are keen to develop the best of character, you can do so through the recitation of the Holy Quran. If you are very fond of hilly places and they alone provide you with the best recreation and satisfaction, then you should know that the Holy Quran will provide recreation for you on the mounds of musk, even on the Day of Judgment, when all creatures will be in the state of terror. Hadith 36 refers to this. If you want to excel in the worship of Almighty Allah by remaining busy in nafil salah day and night, then you should know that teaching and learning the Holy Quran is a better means of doing so. If you want to keep yourself away from all troubles and save yourself from all anxieties, you can do so simply by devoting yourself to the Holy Quran. If you need to consult a physician, you should know that Surah Fatiha provides treatment of all diseases, which was discussed in Hadith 1 of part 2. If your numerous daily needs remain unfulfilled, then why should you not recite Surah Yasin? If you hanker after money, you had better read Surah Waqi'ah. In fear of chastisement in the grave haunts you, it can also be relieved by the glorious Quran. If you are looking for an occupation that will absorb all your time, then you can find none better than the Holy Quran. If one has acquired the wealth of the glorious Quran, then he should carefully guard against its loss. To lose such blessing after having got it is a great tragedy. He should also abstain from such unworthy acts as might convert this blessing into a curse. MashaAllah, the Shaykh Rahmatullah is encouraging us to read Quran. If you need this, do this. If you need this, do this. Read Quran. If you need this, read Quran. As I said, if you got financial problems, read Surah Waqiyah. If you're scared of Azab al-Qabr, read Surah Mulk. If you want your needs fulfilled, read Surah Yasin in the morning.
If you want your sins forgiven, read Quran Sharif. Yasin in the morning, Yasin in the evening brings forgiveness. So Quran Sharif is a blessing. Ramzan is around the corner. Quran Sharif की तिलावत शुरू कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करो। अल्लाह के हज़रत ने फरमाया अगर तुम्हारे बहुत गुनाह हैं और डर है गुनाह होगा, कुरान शरीफ पढ़ो, because Quran Sharif will do सिफारिश for you on the day of Qiyamah. तो कुरान सिफारिश will get you forgiveness इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आप जिक्र करा लें, हम चलते हैं। السلام مشكي ها مشكي والله مشكي لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. sorry Sheikh. भाई इधर से बैठो, ताकि कोई लेट आए तो तुमको लात न मारे। ऑलराइट, राइट डाउन देयर। फिर चाय आए तो चाय यहाँ से आ सकती। जज़ाकल्लाह। अभी कोई आने वाला बाकी है नहीं? चलो, कहाँ तक पढ़ा था सबक? वान साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु तक या उससे पहले? वान्हु क़ाल बैनमा रजुलुन मिनल मुस्लिमीन। है what's the hadith number? 5873। खोल लिया? चलो पढ़ो जल्दी जल्दी। और मोहम्मद وعنه رضي الله عنه قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه خر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مد السماء الثالثة فقتل يومئذ 70 وأسر 70. Which chapter are we reading? Al-Mu'jizat, miracles of Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. So, وعنه يعني عن ابن عباس, as Ibn Abbas was mentioned above. Whilst a man from Muslims on that day, meaning Battle of Badr, was running after a man from the mushriks in front of him. Ithri rajulin, Ithri means footsteps, in his footsteps, following him. Suddenly he heard striking of a whip above him and the voice of a horse rider saying, "Move forward, Hayzum." Hayzum is the name of the horse and harf nida is mahzuf. Aqdim ya Hayzumu.
अक़दम युक़दिमु आगे बढ़ना, आगे बढ़ ए हैज़ूम, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम है हैज़ूम. Suddenly he looked at the mushrik ahead of him who had fallen on his face flat. He looked at him. Suddenly his nose was split apart and his face was also split like the striking of a whip, and all that had become green, bruised. So the Ansari came and mentioned this to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who said, "You have spoken the truth. That was help from the third heaven." On that day, they killed 17 and they captured 17. Do you understand all the wordings? Any word you don't understand? بينما whilst يشتد running في إثري behind سمع ضربة بالصوت فوقه صوت الفارس يقول واو is حالية whilst Sautul Faris was saying, Faris, Ghodsawar, horse rider from Faras, saying, Aqdim Hayzoom, Aqdama Yuqdimu, Age Barna, Ya Harfi Nida Mahzoof, Hayzoom, name of the horse of Jibreel. That was Jibreel alayhi salam, who had come down to help the Sahaba in the battle of Badr. Now this Sahabi witnessed this miracle himself. So it's karamat for the Sahabi and mu'jiza for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whom the Sahabi follows. Why? Because the karamat of a wali is karamat for him, but it's a mu'jiza for his Prophet whom he follows. So, he looked at the mushrik in front of him. Kharra yakhiru, kharran means girna, fall. Mustalqiyan, istalqa, yastalqi, istilqaan, chitletna. He was lying, he fell flat on his face. He looked at him. Khutima anfuhu. Khatama yakhtimu khatman, kibana, to hit someone on the nose. And he was struck on the nose. Was shukka wajhuhu, shakka means to split. And his face was split like the striking of a sword, a whip. And it all had become green. Walaikum salam. Alhamdulillah. कारगुजारी पछि हाम्रो You, फ्रेन्च के नै हो किन friends, friends, kata wala kaya. परेको Madam Nisho. Madam Nisho kali aure. भन्नु मिस्यो सानो माटम Lu परेको boleh dia. Pasal. Zodiac. अल्लाह अकबर वो जुनु हाँ. लालू में इट इज नहीं यार Okay, salam. हाँ जी. चलिए इख्दर यख्दर इख्दिरारन from akhdar. Akhdar means green. Everything had turned green. Ansari came and mentioned this to Nabi sallallahu alaihi wasallam, who said sadaqta. चलिए ذلك madad. Madad means assistance, support, something extra. Like if you had ink pot, the ink was going down and you put more ink in it, that's called madad, to add in it. Then on that day they killed 70 and they captured 70. Even though the mushriks were 3 times more in number. The odds were 1 to 3. Muslims were only 313 and they were 1,000. And still they not only beat them, they killed 70 and they captured 70. This is mu'jiza in itself of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. जी आगे चलिए. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رايت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم احد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان كاشد القتال ما رايتهما قبل ولا بعد يعني جبرائيل وميكائيل. I saw on the right of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and on his left in the battle of Uhud 2 men upon whom were white clothes. They were fighting like the most fearsome fight. I had not seen them before nor after. Him and Jibreel and Mikael.
Jibril alayhi salam in his original form is so strong that he can topple the whole city of Lut upside down. But when he comes into the form of human being, he becomes like human being. He has to be like a human being. That's why he was fighting in the most strongest way. Alayhima thiyabun bid, white clothes. Okay, who is seeing this? Sa'd ibn Abi Waqqas, who is a Sahabi, who later on in his life became blind. But perhaps they say because he had seen the Malaika, the effect of that. Ibn Abbas also became blind at the end of his life. يُقَاتِلَانِكَ أَشَدِّ الْقِتَالِ. I did not see them before. Now this happened in Battle of Badr. Uhud. You might ask a question here, but there was defeat in Uhud. The answer would be that this was before the Sahaba came down from the hill and went against the instruction of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. When that happened, then because of that disobedience of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, the Malaika had to leave. Like in some circumstances, they come to help, something happens, the Malaika can't stay anymore, they have to go. So perhaps it so happened that they were fighting, the battle was, they were winning the battle, but suddenly that mistake was made and the Malaika had to leave, and that's when the defeat took place. Wallahu alam. Chaliye. وعن البراء رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد Huzur sent a group of people to Abu Rafi. Rahtan, Raht is, it means a group, but in Arabic is very beautiful language, versatile. Raht is used for a group between 3 to 9. 4, 5, 6, 7 are called Raht. In Surah An-Namal, وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. تِسْعَةُ رَهْطٍ. If it goes above 9, 10, 11, then they're not called Rahtun. If it's less than 3, like 1 or 2, then they're not called Rahtun. So Rahtun is a specific amount of people. He sent a small group to Abu Rafi. Now, Abu Rafi was from among the Yahud, and he used to abuse, insult Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam in satire, and he used to live in a very protective fort. He thought nobody can reach me. He was wealthy, his wealth could protect him. But when his shararat and his khabasat, went beyond limits, exceeded the limits, that's when Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, we have to deal with him now. He's broken his treaty and he's gone against everything. So he said, who's going to finish him off? Abdullah ibn Atiq entered in his house by night whilst he was sleeping. فقتله, killed him. فقال عبد الله بن عتيق فوضعت السيف في بطني حتى أخذ في ظهره. I put the sword on his belly until it took his back, meaning went out from the other side. فعرفت أني قتلته. I knew I had finished him off. فجعلت أفتح الأبواب. I began to open the doors حتى انتهيت إلى درجة, until I reached a step. درجة here means siri, step ladder. فوضعت رجلي. I put my foot on it. فوقعت في ليلة مقمرة. But I fell in Chandni Rat, night of moonlight. فانكسرت ساقي. My shin broke. فعصبتها بعمامة. I tied it with an imama. فانطلقت إلى أصحابي. Then I somehow proceeded towards my companions. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Then I reached Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. فحدثته, and I mentioned it to him. فقال أبسط رجلك. Spread your leg. فبسطت رجلي. I spread it. فمسحها. He wiped his hand over it. فكأنما لم أشتكيها قط. It is as though I have never had any pain in it.
Ishtaka yashtaki, ishtikan literally means shikayat karna, to complain. But ishtaka is also used for bimari, sickness. Because when you're sick, you complain. So Huzur wiped his hand over my leg and my pinli, which was broken, my shin, my calf, which was broken, right, because I fell from top. I thought there was a step there. So I was putting my foot on the step, but there was no step ladder. It somehow slipped or something happened and he fell on the ground, right, from a high wall of the fort. So he came to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he wiped his hand over it, and all the pain went away. This is the mu'jiza of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. By just wiping the hand, the whole pain went away. Do you understand all the words? حتى انتهيت إلى درجة, I reached a daraja, a step ladder. فوضعت رجلي, I placed my step on the step ladder, thinking that I am going to climb down. However, I fell on the ground. فوقعت في ليلة مقمرة, مقمرة يعني ذات قمر, night of moonlight. There was some moonlight, but still, I slipped. فانكسرت ساقي فعصبتها عصبة, to tie. بعمامة, my imama. I tied my imama to keep my pindali, intact and reduce the pain. And then I somehow limped towards my companions, and then we reached Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. चलिए आगे. وعن جابر رضي الله عنه قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء. On the day of Khandaq, we were digging the earth, and suddenly a severe rock appeared. كدية شديدة الأرض الغليظ والشيء الصليب بين الحجارة والطين. A rock, some severe rock appeared. So Sahaba could not break it. So فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق. This has appeared in the Khandaq, this rock-like earth, hard earth. فقال أنا نازل, I'm going down. ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. Then he stood in the Khandaq on that hard earth which is like rock, whilst his belly had a stone tied upon it. وبطنه, واو is حالية, معصوب عصبة يعصب, to tie. Hajar was tied upon it, because we had remained for 3 days and not tasted any food whatsoever. ولبثنا, واو حالية, we had tallied and stayed, remained for 3 days, لا نذوق ذواقا, without tasting any food. Now, why did they tie the stone on the belly? Number one, this was a special type of thin stone, and it had some coolness in it. And it was their experience that if you tie that stone on your belly, then you somehow don't feel the severity of the hunger. It helps in reducing the pain and the pangs of hunger. Number two, they used to tie that thin stone on the belly to keep their back straight. Because if you're hungry, then you bend down. And if you keep bending down, you become hunchback. So in order to keep the back straight, they used to tie that. So Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam had that tied to his belly. अच्छा, आगे हदीस लंबी है, चाय पी लो, ठंडी पड़ जाएगी. मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना इसको शुरू करने से पहले पिला देता. जल्दी जल्दी पी लो. ठंडी चाय अच्छी नहीं है, गरम गरम पीनी चाहिए. Is it hot? गरम चाय. The previous hadith we studied, does that mean that it's possible to see angels in the human form? In the previous year, previous era, बहुत होता रहेगा. Malaika used to come in the form of human beings. बहुत स्टोरीज है ना. वो जवान आदमी जा रहा है और चलने लगा. कहाँ जा रहे हो? मैं मलकुल मौत हूँ, तुमको लेने आया हूँ. तो मैं सीधे मलकुल मौत.
Others could not see him, but he could see. जैसे किसी ने इंफ्रारेड कैमरा पहना हो तो उसको अंधेरे के अंदर में वो नजर आता है, दूसरों को नजर नहीं आता, बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड लाइट। तो ये अलामत है कि अल्लाह पाक चाहें तो किसी को कुछ दिखाएं, दूसरे को ना दिखाएं। दो तीन दफे मलकुल मौत आए थे शेख के पास। हमारे हजरत के उसमें है बयानात में, जमात मोहम्मदी में हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह सुलाया, फिर देखा कि हजरत शेख बातें कर रहे हैं। हालांकि हजरत शेख को तो लेटा दिया था और मुंह भी दीवार की तरफ था। लोग सोच रहे हैं कि बातें हो रही हैं, बातें किसे कर रहे हैं। बाद में जब हजरत को उठाया और वजू करा रहे थे तो पूछा कि हजरत वो बातें किसे हो रही? अरे तुमने सुनी? कहाँ? तो फिर आ गई थी। कौन? मलकुल मौत। ख्वाब में नहीं, ख्वाब नहीं, रियल लाइफ में आई थी। बैठे बातें करने लगे तो मैंने कहा कि चलो ले चलो मुझे। उन्होंने कहा नहीं, अभी आपका टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तो आपको मदीना शरीफ में लेने आएंगे इंशाल्लाह। इसलिए हजरत ने यहाँ कहा था। हजरत 1981 में यहाँ आए ना, तो स्टैंगर में हजरत ने रमज़ान गुजारा, पूरा रमज़ान से चंद दिन पहले आ गए थे, फिर सीधे यहाँ आने वाले थे। तो हजरत मौलाना अब्दुल रहीम मुताला साहब ने कहा हजरत यहाँ आए तो ज़ाम्बिया भी चलो, रास्ते में है। वहाँ सईद इंकार साहब ने कहा रियूनियन भी चलो। अब मौलाना सईद इंकार साहब से हजरत का पहले से कनेक्शन था, तो हजरत शेख दोनों जगह गए, रियूनियन गए, मौलाना सईद इंकार साहब सुना रहे थे, तो वहाँ से यहाँ आना था। तो हजरत शेख को प्लेन उतरने चढ़ने में बहुत तकलीफ होती थी, 86। तो कहते कि डायरेक्ट फ्लाइट है, तो नहीं डायरेक्ट तो नहीं है, साउथ अफ्रीका से माडागास्कर में रुकना पड़ेगा। द फ्लाइट स्टॉप्स इन माडागास्कर देन गोज टू यूनियन, वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट फ्लाइट। क्या होगा? खैर फ्लाइट बुक कर ली, बैठ गए। रास्ते में पायलट ने कहा कि वो माडागास्कर में वेदर ख़राब है, वहाँ फ्लाइट नहीं उतर सकती, वी गोइंग डायरेक्ट यूनियन। फिर रियूनियन से ज़ाम्बिया गए, चिपाटा, फिर चिपाटा से यहाँ आए तो हजरत की तबीयत एकदम गिर गई। यहाँ आके हजरत बीमार पड़ गए, बीमार बीमार बीमार, बहुत कमज़ोरी हो गई, हॉस्पिटल बेहोश होने लगे, बड़ी जनरल हॉस्पिटल में दाखिल किया, फिर खून चढ़ाया। कैमला चल गया आटलो मोड़ आयो એટલે દૂધ પીવું છે કે ચા પીવી છે? ચા પીવી એટલે तो वहाँ से भी ऐसा हुआ। ये रास्ते में फजर की नमाज आ रही थी, तो फजर बीच में पढ़ना पड़ेगा। अब फ्लाइट में हजरत शेख को वज़ू कराना बड़ा मुश्किल काम है, तो हजरत शेख को नींद भी नहीं आई, बेचारे पूछने लगे फजर का क्या होगा, फजर का क्या होगा, फजर का क्या होगा। तो उसमें ये हुआ उल्टा, रास्ते में फ़्लाइट उतरी, ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट थी। उसने कहा कि हम तो डायरेक्ट हीथ्रो जाने वाले थे, लेकिन यहाँ कुछ हुआ है तो पैसेंजर्स यहाँ से हमने थोड़े लेने हैं, तो हम इटली के फुना एयरपोर्ट पर उतरेंगे। हजरत शेख ने कहा क्या कहे? हजरत जी चलो हमारे फजर का बंदोबस्त हो गया। फ़्लाइट वहाँ पर उतरी, सब काफ़िला प्लेन से बाहर निकला, पेशाब इस्तिंजा वज़ू बाजमात फजर, फिर प्लेन में सवार हुए और फिर हीथ्रो आए। तो
हज़रत बीमार पड़ गए थे, यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हुए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, तो चूँकि बेहोशी थी, तो हमारे हज़रत बहुत शार्प थे, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमत नाजिल करे। हज़रत ने फ़ौरन बंदोबस्त कराया, चेक इंक्वायरी कराई कि हज़रत का अगर कुछ हो जाए तो हज़रत को यहाँ से सऊदी ट्रांसपोर्ट करने और बखी में दफन के लिए ले जाने का कुछ बंदोबस्त, प्राइवेट जेट फ़्लाइट, क्योंकि हज़रत शेख को तो वहाँ की जिनसिया मिल गई थी, नेशनलिटी, हज़रत शेख की पासपोर्ट सऊदी थी, तो हज़रत शेख को वहाँ ले जाएं, वहाँ दफन करें। तो इंक्वायरी भी हो गई कि हाँ सब, इब्राहिम भाई सईद को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने सब इंक्वायरी कर ली, बंदोबस्त भी हो गया था, कुछ हो जाए तो इंस्टेंटली हज़रत को वहाँ पहुँचा दे और वहाँ दफन करें। बाद में हज़रत शेख तो ठीक हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से असल में खून कम हो गया था, बहुत ट्रैवलिंग किया ना, तो फिर जो है किसी ने मौलाना नजीबुल्लाह साहब ने कह दिया कि हज़रत इन्होंने तो ऐसा किया था। अच्छा ये किया था? तो फिर बुलाया हज़रत, अरे यूसुफ तुझे पता नहीं है, हमसे वादा हुआ है कि मदीना में लेने आएंगे। वो मलकुल मौत आए थे ना, कह गए थे, तो नज़र आती थी। हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत भी है ना, मैं अपना काम कर रही थी, दिहिया कल भी आए, हुजूर के साथ बैठ के थोड़ी देर बातें की, चले गए। मुझे तो पता नहीं था कि वो जिब्रील थे। हुजूर यहाँ से उठ के गए मस्जिद में और ख़ुतबा देना शुरू किया, उसमें फरमाया अभी जिब्रील आए थे और ये कह गए, तब मुझे समझ में आया कि वो तो दहिया कल भी नहीं थे, वो जिब्रील थे। तो नज़र आते थे। उम्मे सलमा ने भी देखा हज़रत जिब्रील को दहिया की शक्ल। असल में दहिया कल भी कबीले बनु कल्ब से ताल्लुक़ रखते थे, और ये कबीले बनु कल्ब मदीना से बाहर रहता था, तो कभी कभी हज़रत दहिया मदीना शरीफ आते थे, तो वो बहुत हसीन जमील थे, तो लोग उनको देखने के लिए बाहर निकल आते थे, वो दहिया आए हैं, तो वो आ करके फिर काम करके चले जाते थे। कोई मिलते मिलते कोई सलाम कलाम करे या करे, समझते परदेसी आए हैं या चला गया। तो हज़रत जिब्रील आते तो उनकी शक्ल में आते, तो लोग समझते कि हज़रत दहिया अपने गांव से आए हैं किसी काम के लिए, फिर चले गए, हालांकि वो जिब्रील होते थे। तो इसलिए हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। चलिए चाय पी ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फरमाया अननाज़िलुन फ़क़ामा, फिर क़ाला फ़अख़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मिअवल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में कुडाल ले ली। कुडाल, मिअवल, पिकैक्स, वो पिकैक्स अपने हाथ में ली। फ़ज़रबा, और मारा उसको, ही स्ट्रक इट, फ़आद कसीबन अहयला, वो तो ऐसा हो गया जैसे रेती का तौदा जो बह रहा हो। It became like a sand dune which is flowing. कसीब के माना रेती का तौदा, sand dune, और अहयला हाल यहीलु हईलन means to flow, बहना, like a sand dune which is flowing. When the wind comes, it moves the sand from one place to the other. आगे हदीस के जो रावी हैं कौन हैं? हज़रत जाबिर। हज़रत जाबिर सेज फन कफ़ा टू इलमराती, I returned to my wife. In kafa yani raja'a, I turned around and went to my wife. فقلت هل عندك شيء? Do you have something to eat? فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا, because I have seen severe hunger in him. فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير. She brought out a bag in which there was only one sa' of jaw. One sa' is for mud. So one sa' of barley. وَلَنَا بُهْمَةٌ دَاجِنٌ, and we had a small lamb which stays in the house. बुहमतुन mean भेड़ का बच्चा, lamb, और दाजिन पालतू जानवर को कहते हैं. It can be used for anything that stays in the home, that does not go out into the fields to graze. So a goat or a sheep or a lamb
or even a pigeon. If you have pigeon in your home and you breed them, then the pigeon is called dajin. Anything that is breeded at home is called dajin, which does not go outside, which is fed and looked after at home. So we had a small lamb which does not have lots of meat in it, and it was, grazing at home. فذبحتها, I slaughtered it. وطحنت الشعير, and I ground the barley. حتى جعلنا اللحم في البرمة, until we put the meat in a pot. برمة, pot. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته, I whispered to him. سار يسار مسارة كمعنى to whisper. So I said to him secretly, whispered to me, يا رسول الله. قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك. I have slaughtered a small lamb and ground one sa of dough, so you and a small group can come with us to eat. Anta wa nafarun ma'aka. Wow is haliya. Nafar is also for less than 10. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم, but he screamed. Saha means to scream loudly. يا أهل الخندق إن جابر صنع سورا فحي أهلا بكم. ए खंदक वालों, जाबिर ने फीस्ट बनाया है, चलो. सूर के माना फीस्ट, खाने की मेहमानी, बहुत बड़ी मेहमानी और जियाफत तैयार की है. हय्यहलन, हय्यहलन साथ जब आए तो उसके माना चलो जल्दी जल्दी. हय्यहलन, जल्दी जल्दी चलो. फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुनज़िलुन्न बुरमतकुम वला तख़बिज़ुन्न अजीनकुम hatta aji'a. Do not take the pot down from the stove and do not bake the dough until I arrive. Okay ji? La tunzilunna, anzala yunzilu, niche utarna. Burma, pot. Wala takhbizunna, khabaza yakhbizu, roti pakana. Do not bake ajinakum, ajeen ke mana gunda hua atta, the kneaded dough, until I arrive. Waja'a, he came. فأخرجت له عجيننا, I took out that dough. فبصق فيه وبارك. So he put his saliva in there and made dua of barakat, blessed it. ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك. Then he intended for our pot and he spit his saliva in there and blessed it. ثم قال أدعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. Call a baker who can bake with you and scoop from the pot and do not bring it down. Okay? Ud'i, call. Khabizatan, roti pakane wali. Khabaz yakhbizu, roti pakana. Some lady from the neighborhood to bake with you. And waqdahi, qadaha means उसमें to scoop, तो उसमें से निकाल कर लेना, तो चमचे के जरिए उसमें से लेती रहो और उसको हटाना नहीं. Meaning, keep it covered and take from one side and do not bring it down from the stove. Leave it there and keep taking from there. وهم ألف, those who arrived were 1,000. فأقسم بالله, I take qasam of Allah, لا أكلوا, they all definitely ate, حتى تركوه وانحرفوا, until they left it and they turned around. وإن برمتنا لتغط كما هي, whilst our pot was still जोश मारना. गत्ता यगित्तु के माना जोश मारना. क्या तर्जमा करेंगे जोश मारने का? It was still active and it was still put सूप उसमें से फट रहा है, गोश्त भी निकल रहा है. It was still full. जोश मार रहा है. कमा ही जैसे वो शुरू में था.
وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ, and that dough was still baked as it was. Okay? Now, how did this happen? Kun fayakun. Any. Every scoop that was taken out was replaced by Allah with kun. Every dough that was taken and baked, it was replaced immediately by Allah, kun fayakun. So it's never going to finish. This is like, the fruit of Jannat. Allah says in Surah Waqi'ah, وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. What does لَا مَقْطُوعَةٍ mean? Neither will it be cut off, nor will they be prevented from eating it. So neither will it be cut off. The tafsir of it is that no matter how much fruit you take from that tree, it will instantly be replaced. So Jannah's fruit will not be seasonal, once a year or one season. It will be permanent 24/7. It will always be there. The trees will always be full with fruits. Because as soon as you take it, it's replaced. So here as well, whatever gosht, meat was taken out from the pot, and whatever dough was taken out for baking, Allah replaced it instantly. That's why it never finished, and it was as it was in the beginning. This is mu'jiza of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. From one small lamb, you cannot feed 1,000 people. It was only, for maybe a small group, like he said, few people, madun al-ashara. And in this hadith, when Jabir was coming, and behind him was Nabi sallallahu alayhi wasallam and all the Sahaba, and his wife saw the whole army coming, she was scared. And she said, Jabir, मर गए, जलील कर दिया तूने मुझे, रुसवा कर दिया, क्या होगा? And he said, what can I do? He told me, I just told him, I whispered in his ears, but he told that everybody come for the feast. So, and he's given these instructions. Okay, then we'll do exactly what he said. चलिए, पढ़ो आगे. وعن ابي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين يحفر الخندق قال يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتلك الفئة الباغية. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said to Ammar, whilst we were digging the grave, he began to wipe the head of Ammar, and he said, Bu'sa ibn Sumayya, hardship will come on the son of Sumayya. The rebelling group will kill you. Ammar is the son of Yasir, and his mother's name is Sumayya. His father and mother are the first shaheeds in Islam. Sumayya was the first shaheeda. The first shaheed in Islam is the lady. In Makkah Mukarramah, Abu Jahl struck a spear in her private part, which killed her. And then his father's legs were tied to camels in opposite directions, and both camels were made to run, and his body was split in two. So Ammar himself suffered a lot of torture. So Huzur said to him, Bu'sa ibn Sumayya. Bu'sa means Ya Shiddat Ammar. Oh, Ammar's going to have a tough time. Bu's means tough time, hardship. Sumayya's son is going to suffer hardship. Al-Fiyatul Baghiya will kill you. Al-Fiyatul Baghiya, the rebelling group. Now, what happened? Many years later, maybe 35 years later. Now, Khandaq is in the year 5 after Hijrah. And Siffin is in the year 37. So how many years after this incident? 32 years later. When there was dispute and civil war between Hazrat Ali and Hazrat Muawiyah, Hazrat Ammar was in the group of Hazrat Ali. And opposition was Hazrat Muawiyah. So Hazrat Muawiyah's army
killed Hazrat Ammar. This hadith is taken as a dalil that Hazrat Ali was on haqq during those battles and Hazrat Muawiyah was mistaken. Because who told him Al-Fi'atul Baghiya, yani Al-Kharija an Ta'atil Imam. Though the who came out and rebelled against the Imam at that time is the group that will kill him. So, what is this? A prophecy, Peshingoi, which came true. Huzur said it, and it happened exactly as Huzur had said it. Chaliye. وعن سليمان بن سورد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلي الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم رواه البخاري. يغزونا مشدد يعني لا يغزوننا. Sulaiman ibn Surad radiyallahu anhu sahabi says, Nabi sallallahu alaihi wasallam said, when the Confederates were moved away from him, now we will attack them and they will not attack us. We will travel towards them. Ujli al-ahzab, ajla usually ijla'an ke mana hatana, to remove. So ujliya, they were moved away and turned away. Al-ahzab, plural of hizbun, confederate groups. This is reference to the Battle of Khandaq, where 10,000 strong army came to wipe out Medina, and they were stuck there for 3 weeks, 21 days. And in between, many incidents happened. But then they lost courage, lost heart, and they returned. And many things happened which you studied in Sirah, in the Battle of Khandaq. So when they were moved away, Huzur made this remark, which was true, that now we will attack them, they will not attack us. Meaning up to now they've been attacking us for 5 years. They came to attack us in Badr, they came to attack us in Uhud, they came to attack us in Khandaq. But now their back is broken. The snake's back is broken. They won't be able to come to attack us anymore. Now we will attack them. We will fight them. And it so happened that in the year 6, he went for Sulh Hudaybiyah. And in the year 8, Makkah was conquered. So after the Khandaq, Quraysh were never able to come to Medina to attack. This Peshingoi and prophecy was true as he had said it. نحن نسير إليهم, we will move towards them. चलिए आगे. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبرائيل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته أخرج إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. When Nabi sallallahu alaihi wasallam returned from Khandaq and took off his weapons and placed his weapon and had ghusl, Jibril came and he was wiping from his head the dust. नफद यनफुदु के माना झाड़ना, जो अपने सर पर बालों से गुबार को और धूल को झाड़ रहे थे, dusting himself. So he said, قد وضعت السلاح. This is question. Have you took off your weapons? والله ما وضعته. Wallah, I have not taken them off. أخرج إليهم. Go towards them. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, where? And he pointed towards Banu Qurayza, because they had committed treason. So he went towards them. وفي رواية البخاري قال أنس كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. As though I can see the dust rising. Sata means to rise. Rising in the alleys of Banu Ghanm due to the mawkib, the group and the army of Jibreel alayhi salam, the battalion of Jibreel alayhi salam, when Nabi sallallahu alayhi wasallam proceeded towards Banu Qurayza. So Jibreel alayhi salam coming and instructing
This is all mu'jiza of Nabi sallallahu alaihi wasallam. चलिए आगे. وعن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية In the battle of Hudaybiyah, they became thirsty. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة He had a small lota in front of him. فَتَوَضَّى مِنْهَا, he did wudu from it. So rakwatun, chota sa lota. ثم أقبل People moved towards him. They said, لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّوْ بِهِ وَنَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكْوَتِكَ. We have no water with which we can do wudu or drink except what is in your lota. فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ. He placed his hand in that lota. فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. पानी जोश मारने लगा उंगलियों के बीच से. फार यफूरु जोश मारना. जअला बमाना शरअ. शरअ बदअ. अलमाउ यफूरु जोश मारने लगा हुजूर की उंगलियों के बीच से. कअमसाल अलउयून, जैसे चश्मा फूटता है. Like fountain. قال فشربنا وتوضأنا. We drank and we did wudu. قيل لجابر كم كنتم? How many were you? He replied, لو كنا 100,000 لكفانا. If we were 100,000, that lota would have been enough for us. كنا 15,100. We were 1,500. 15,100. 1,500 Sahaba did wuzu and drank from that lota of Hazrat Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Now the water began to क्या कहते हैं, gush forth from between the fingers. Hafiz ibn Hajar has said it could have one of two meanings. It could mean that when he put his hand in there, his barakati hand increased that water. And it could mean that water literally sprung from between the fingers. Right? उंगलियों के बीच में से जोश मारने लगा. दोनों मौजिज़े हैं, लेकिन ये दूसरा जो है मौजिज़ा में अबलग है, ज़्यादा बलीग है. क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर लाठी मारी थी तो 12 चश्मे फूटे थे. मगर पत्थरों के बीच से पानी निकलना तो नज़र आता है, इंसान के जिस्म से पानी निकलना ये नज़र नहीं आता. तो ये बड़ा मौजिज़ा है कि उंगलियों के बीच में से पानी फूटने लगा. चलिए. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 يوم الحديبية والحديبية بئر فنزحناها. In the battle of Hudaybiyah we were 1400. चलिए. And Hudaybiyah had a kuwa and we dried it up. فنزحناها, meaning we took all the water out until to the extent that it was dry. فلم نترك فيها قطرة, we didn't leave a drop in it. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها. This news reached him, he came. فجلس على شفيرها, he sat on its edge. Shafir, on the side, edge of it. ثم دعا بإناء من ماء, he called for a container of water. فتوضأ, did wudu. ثم مضمض, and he did kulli. ودعا, and made dua. ثم صبه فيه, and then that water of kulli and wudu was thrown inside the well. ثم قال دعوها ساعة, leave it for a moment. فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. So they quenched their own thirst and that of their rides, the camels, until they left from there. Both mu'jizat happened. The previous one as well in Hudaybiyah and this one as well. चलिए. وعن عوف عن أبي رجاء عن बस इसको बाद में पढ़ना. 5 to 8 हो गई है, वरना का टाइम हो गया है. यूनुस बिलाल तो आया नहीं, ये तुम ले लो. मैं सोचा वो आएगा, अल्लाह का बंदा. मेरी किताब वहाँ कौन रख देगा? मोहम्मद, तुम वहाँ रख देना. चलो. या करीम. बिलाल कैसे हो? बिलाल, where's Bilal? सब्जी नहीं है. हमारा फोन मेरे पास. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है जी? चलो जी, पढ़ेंगे. कहाँ से पढ़ेंगे?
रियादुस सालिहीन कौन सी हदीस चल रही है? हदीस नंबर 1546। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंबा ख्वाब। ख्वाब तो बयान हो गया था, आधी हदीस हो चुकी थी, राइट? It got the half left. The interpretation. हाँ, قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا. This night I have seen something surprising. فما هذا الذي رأيته? What is it that I saw? قال لي أما إنا سنخبرك. The thing is that we will inform you. أما الرجل الأول الذي رأيت عليه الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. As for the first person upon whom you came, whose head was being crushed with a stone, then it is that person who took hold of Quran but abandoned it, left it, and he slept even from the faraz namaz, let alone the nawafil and tahajjud. हो गया जी। यरफुजू रफद यरफुजू रिफ्जन मीन्स छोड़ देना, abandon कर देना। और यनामु अन सलातिल मकतूबा, who stays asleep from faraz namaz, doesn't pray faraz namaz either. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شتمه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. As for the man whom you saw, you came upon, and his jaw was being split up to his nape, and his मनखर क्या दर में क्या था मैंने कल मनखर का nostril, his nostril up to his nape and his eyes up to his nape, then it is that man who would go out in the morning from his house and forge lies which would reach the horizons. فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقِ. आफाक प्लूरल ऑफ उफुक, और अतराफ आलम में पहुंच जाता था। यानी इतनी बड़ी फेंक मारी कि साहब सारी दुनिया उसकी बातें कर रही है। फेंक यहाँ मारी और पाकिस्तान में उसकी बातें हो रही हैं, इंडिया में बात, बांग्लादेश में बातें हो रही है कि बोल्टन में साहब फलां ने ऐसा किया, हालांकि उस बेचारे का फरिश्ता भी नहीं जानता। भाई लंदन में फलानी ने ऐसा किया, भाई लेस्टर में फलाने का ऐसा हुआ, भाई स्कॉटलैंड में फलानी ने ऐसा किया। अब ये सब फेंक मारी है उसने। तो बीबीसी सबसे बड़ी फेंक मारने वाला है, इतना झूठ बोलता है जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि इनका उसूल है झूठ को इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि सच मगलूब हो जाए और झूठ गालिब आ जाए। तो ये जो ऐसी फेंक मारने वाले हैं, झूठ बकने वाले हैं, उनको ये अजाब होगा, अल्लाह बचाए। क्योंकि वो झूठ किससे बोलते थे? मुंह से, इसलिए मुंह चीरा जा रहा। और पहला आदमी जो है कुरान उसके दिमाग में था, महफूज था सर में, लेकिन उसने उस कुरान को पढ़ा नहीं, उस पर अमल नहीं किया, इसलिए उसका सर फोड़ा गया। You get it? The connection between the crime and the punishment. चलिए, وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. As for the men and women who were naked, who were in something which is made like tanur, then they are the fornicating men and fornicating women. हो गया जी? उनको अजाब किसका हो रहा था? आग में। हाँ? और क्यों? हजरत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया कि अजाब में और सज़ा में कनेक्शन क्या है। दुनिया में ये लोग अपनी शहवत की आग मुख्तलिफ तरह से भड़काते, फिर जाके ज़िना करते। यू हैव टू इग्नाइट योर पैशन फर्स्ट। अब उस ज़माने में होगा किस तरह से होगा 1400 ईयर्स अगो। इस ज़माने में ब्लू मूवीज़, पोर्नोग्राफी, डर्टी मैगजीन्स, फिल्थी स्टफ, ये सब देखते हैं, डर्टी वीडियोस व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, और उसके बाद शहवत भड़कती है तो फिर बाहर जाके कोई रंडी ढूंढते हैं
और उस रंडी के साथ मुंह काला करते हैं। तो चूंकि they used to ignite the fire of their passion by this way, in this way, that's why that fire was collected over there and they are being punished in that fire. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. As for the man upon whom you came, who was swimming in that river, and in whose mouth the stone was thrown as a luqma, morsel, then it is the person who used to consume interest, who used to eat interest. Now, जो interest लेने वाला है ना, है लोगों से interest लेता है, गोया उनका खून पसीना चूसता है. He is sucking their blood. Because you take interest and for 25, 30 years you're paying and your whole blood is being sucked by them. You go to work 9 till 5 and you are worried about paying your mortgage, paying your debts all the time. And by the time 25, 30 years pass, you become old, weak, pale, your dacha is gone, your teeth are breaking, you don't know what, you're an old man, right? So that interest charger has sucked all your blood. And he sucked the blood of the community. That river of blood was the interest which he charged from people. And as he used to eat people's interest, use it for his own eating and drinking, he was given the luqma of stone in his. And if you eat stone, what's going to happen? You can't digest it. And he's being thrown stone upon stone, and his belly is becoming big and big and big. In another riwayat in Mi'raj, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam saw men who had bellies as large as a room, and inside were snakes and scorpions biting them, and severe pain. That these are people who used to take interest, consume interest. In the night of Mi'raj, he also passed by an area in Jahannam, and there was such a huge stench, it was unbearable. And he said, what is this? Where is this smell coming from? And this is coming from the furuj of the zani and zunat, from the pishab ki jagah of the fornicators. बदबू और स्मेल, वैसे भी उसकी बदबू तो वो सख्त होती है, और वहाँ जाकर वो बदबू सारी जमा हुई जहन्नम के अंदर, और ऐसी कि वो जहन्नम वाले भी उस बदबू से पनाह मांगते हैं. तो ये इन गुनाहों की सज़ा है. और ये जो सज़ा यहाँ हो रही है ना, ये टेम्पररी सज़ा है. ये बरज़ख का हाल दिखाया गया, कब्र का अज़ाब. मालूम हुआ कब्र के अज़ाब के मुख्तलिफ असबाब हैं. हमने सुना ना, पेशाब से एहतियात न करना, चुगली करना, गीबत करना कब्र के अज़ाब का सबब बनता है. इसी तरह से इस हदीस से मालूम हुआ हाफिज़ कुरान न पढ़े, नमाज न पढ़े, उसको कब्र का अज़ाब होगा, उसका सर फोड़ा जाएगा. आदमी झूठ पर झूठ बोले, उसका जबड़ा चीरा जाएगा. जिना पर जिना करे, तौबा न करे, ऐसे ही मर जाए तो वो तन्नूर के आग में उसको अज़ाब दिया जाएगा. और सूद खाए, चुपचाप से पैसे ले सूद के और लेता रहे, चार्ज करता है, क्या है यार सब चलता है, और लोगों से सूद ले, बैंक से सूद ले, तो उसको अज़ाब होगा उस खून की रिवर में. और ये टेम्पररी अज़ाब है. ये कब तक होगा? क़यामत के दिन तक, मैदान हशर में पहुंचने तक. फिर मैदान हशर में हिसाब किताब होगा, फिर वो फाइनल डिसीजन जो होगा. लेकिन ये अज़ाब ही कुछ कम है जो कब्र का अज़ाब है. इसलिए इन गुनाहों से बहुत एहतियात करना चाहिए जो कब्र का अज़ाब लाते हैं. चलिए आगे. वअम्मा रजुल करीहुल मरआती अल्लज़ी इंदन नारी यहुश्शुहा व यसआ हौलहा फ़इन्नहु मालिकुन खाज़िनुन नारी. As for the man who was of a scary appearance, who was at the fire, and who was flaming it, kindling it, and he was running around it, then that is Malik, the superintendent of Jahannam. हो गया? Do you understand all the words? Al-Karihul Mar'ati, a scary appearance. In the Nari Yahushuha, Hashe Yahushu,
भड़काना and flame ويسعى حولها مالك خازن النار وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. As for the tall man who was in that beautiful garden, that was Sayyiduna Ibrahim على نبينا وعليه السلام. وأما البلدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. As for the children around him, they were every no maulud and child who died on fitrah, the natural deen. Natural deen, the deen of Islam, which is natural, nature. So they died on the natural deen. Because they died on the nature and natural deen, they are small babies, toddlers, infants, right? So Allah Pak said, in Barzakh, you can stay near Ibrahim alayhi salam. So there are so many children around him, playing around him. We like children. Children are a blessing. May Allah bless those who don't have children with lots of children. बच्चे तो अल्लाह की नेमत हैं. तो ये बच्चे हैं. फ़क़ाल बाज़ुल मुस्लिमीन या रसूलल्लाह व औलादुल मुशरिकीन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व औलादुल मुशरिकीन. Some Muslim asked, Ya Rasulullah, and Mushrik's children were there as well? And he said, yes, Mushrik's children were there as well. Right? Why? Because they were toddlers, infants. They did not commit any sin. They didn't do any kufar, shirk, fisq, fujur. Right? So they are also kept with Ibrahim alayhi salam. They are there enjoying around him. All kids, because they died on fitrat and nature. Now, there is a mas'ala about atfalul mushrikeen. There's about 10 calls in there. What will happen to them? One call is that they will be jannati, they will get najat because of this hadith. Okay. There are other aqwals as well. Some call is tab'un li abaihim. Children are tabi' of their fathers. If the father is Muslim, then they are regarded as Muslim. If the father is non-Muslim, they are regarded as non-Muslim. They will go with them. This is one call. This is mentioned in some hadith. Some say tawaqquf. We don't know. Some fuqaha, ulama, some muhaddiseen say khuddamu ahlil jannah. They will be khadims of ahlul jannah. So these aqwal, sometimes I think because children also vary. Some children are babies, toddlers, infants, and other children are a little bit grown up. They are very close to bulugh, right? 9, 10, 11, 12-year-olds, and they die. Now we can't give one blanket ruling for all of them. Because these, who knows, they might have become baligh, reached the age of puberty, और गुनाह किए हों तो पकड़ हो सके उनकी. इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में सुकूत फरमाते थे. अल्लाहु आलमु बिमा कानू आमिलीन. Allah knows best what they were going to do. Allah will deal with them. So we have hope that these babies and toddlers, they won't suffer anything. But those who are baligh or close to bulu, they will be taken to task because they had aqal, understanding, and then they committed crimes. Anyhow, وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. As for the people, half of whom was beautiful and the other half was ugly, they are a people who had mixed amal salih with other which was sayyi. Allah pardoned them. Tajawaz Allahu anhum, Allah pardon them, forgive them. Rawahul Bukhari. وفي رواية له رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. They took me to a muqaddas zameen. Muqaddas zameen, perhaps where Baytul Maqdis is, Ardul Sham, because one riwayat said, Ha huna al mahshar. Mahshar is here. ثم ذكره. Then he mentioned the above hadith. وقال, he also said, فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع. We proceeded towards a hole which was like tanur. Naqbun, hole, ditch. A ditch which was like tanur. أعلاه ضيق وأسفله واسع. The top is tight and the bottom is wide. يتوقد تحته نارا. And there was fire kindled underneath it.
فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. When the flames rose, they also rose until they were very nearly about to get out. But when the flames went down, they would return in it. There were men and women in there who were unclothed. وفيها حتى أتينا على نهر من دم لم يشك فيه. We came to a river of blood and there was no shak of ravi in the wording of نهر من دم. رجل قائم على وسط النهر وعلى شطر النهر رجل. And the word is that one man was in the middle of the standing in the middle of the river, and another man was on the Shattun Nahar river bank. Shattun means bank, river bank. وبين يديه حجارة. In front of him was stones. فأقبل الرجل الذي في النهر. The man in the river proceeded. فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. When he would intend to come out, this man would throw a stone in his mouth and return him to where he was. فجعل كل ما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان. So he began to do this, that whenever he came to exit, he would throw stone in his mouth and he would return as he was. وفيها, in the riwayat of the other riwayat of Bukhari is فصعدا بي الشجرة فأدخلاني نارا لم أر قط أحسن منها. They both climbed with me on a massive tree and they entered me in a house, like दुनिया में भी tree house बनाते हैं ना, और उसकी बड़ा झाड़ हो तो उस पर एक झाड़ बना देते हैं लकड़ियों का मकान, उनमें रहते भी हैं, सब कुछ होता है उसमें, पेशाब पखाना, टॉयलेट वगैरह, किचन विचन, सिटिंग रूम, सब कुछ होता है, झाड़ इतना बड़ा होता है, उसमें बनाते हैं इस तरह. तो यहाँ भी मैंने देखा कि बहुत बड़ा घर, कभी मैंने उससे अच्छा घर नहीं देखा था. लम अरा कत्तु अहसन मिनहा. फिहा रिजालुन शुयूखुन व शबाब. There were in there men, elderly and young. وفيها الذي رأيته, and in that riwayat word is the man whom you saw يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. He is a fraudster who would tell lies and fabricate lies, and that lie was carried from him until it reached the corners of the globe. So this will be done to him until the day of Qiyamah. وفيها الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. And in the riwayat, the other wordings are the man whom you saw, whose head was crushed. It was a person whom Allah taught Quran. So he slept away from it at night and did not practice on it by day. Slept on it by night, meaning never prayed tahajjud. You should read tahajjud and you should read Quran in tahajjud, especially if you are hafiz the Quran. Allah has given you the Quran to read it. If you are hafiz, you don't pray tahajjud, then this azab will come. And he did not practice on it by day, meaning he used to do fisq and fujur and guna and sins during the day. فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. This will happen until day of Qiyamah. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل. The first house you went was the house of general believers, and this house which you are seeing is the house of shuhada. You know, in this house there were shuyukh and shabab, but in the other house there were shuyukh, shabab, men, women, children, because it was general public's house. Shahadat is normally taken by men, elderly and young. So in the Darul Shuhada, he only saw men and women. But now in Gaza, बेचारे छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हो रहे हैं, तो भी उस घर में जाएंगे इंशाल्लाह. उस वक्त चूंकि जिहाद फी सबीलिल्लाह में शहीद होते थे, इसलिए उनको इस तरह दिखाया गया. I am Jibril, this is Mikail. Farfa rasak, lift your head. Farafa'tu ra'si, I lifted it and looked ahead. فَإِذَنْ فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ. Suddenly in front of me was something like a cloud. قَالَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ. That is your mansion. قُلْتُ دَعَانِي
Adkhul manzili. Leave me, allow me to enter my manzil. Da'ani is from wada'a yada'u wad'an. From yada'u, Amr is da'a. And da'a is for tasniya because Jibril, Mikael both are there. That's why he said da'ani. Both of you allow me to go and enter my mansion. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك رواه البخاري. You have some lifespan left which you have not yet completed. When you complete it, you will come to your mansion. बقي لك عمر, عمر means life, जिंदगी. अभी जिंदगी बाकी है जो आपने पूरी नहीं की, पूरी करेंगे तो आ जाएंगे. आगे अल्फाज की तशरीह है लेकिन वो अल्फाज तो मैं तर्जमा में बता चुका हूँ. ओके, तो इसको रहने देते हैं, इसके बजाय हम हदीस पढ़ लेते हैं. ओके, इसमें रौदतुन मुअतम्मतुन गुंजान बाग की शरह की है. वाफियतुन नबात तवीरतुहु which had full greenery and long trees in it. आगे दवहतुन शजरतुल कबीरा समा बसर इर्तफा सुऊदन मुर्तफिअन रबाबा सहाबा. चलो जी पढ़ो नेक्स्ट हदीस. बाबू बयान मा यजूज़ु मिनल किज़्बी, यहीं से. This chapter is explaining what type of kizb is jaiz. Okay, when telling lie could be permissible. You shouldn't tell lies, never, but in some dire situations, you might be allowed to save your skin, save your life, to say something. اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. Know that lying, though the asl of it is haram, however, in some situations it would be allowed under some conditions which I have elaborated in my book Kitabul Azkar. Kitabul Azkar is another beautiful book of Imam Nawawi Rahmatullah alayhi, which is about zikr azkar and fazilat of remembrance of Allah and du'as, da'wat. ومختصر ذلك, a summary of that is short explanation. أن الكلام وسيلة إلى المقاصد. Kalam, speech, is a means to the maqsid. You say something with some motive behind it. You want to get to something. فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. Anything that is maqsood and praiseworthy and it is possible to acquire it without lying, then lying in it will be haram. وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. And if it is not possible to acquire it except by telling a lie, then kizb will be jaiz in it. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا. Then if acquiring that maqsood is just mubah and halal, then kizb will be halal. وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. And if it is wajib, then kizb will be wajib. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله وأخذ ماله أو أخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. Therefore, if a Muslim hid away from a zalim who was intending to kill him or snatch away his property, or he had hidden his mal and a person was asked about it, then it will be wajib on him to tell a lie by concealing it. وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. Similarly, if he had some amanat of someone deposited to him and a zalim was intending to take it, then it will be wajib to lie in order to hide it, protect it, save it.
وَالْأَحْوَطُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَن يُوَرِّيَ. And more cautious in all this matter is to do tawriya. أحوط, more احتياط. ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه. The meaning of tawriya is that he intends with his wording something which is maqsood sahih, and he is not lying in it بالنسبة إليه अगरचे وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب, though it might be a lie in the apparent wordings and بالنسبة and in consideration of what the mukhatab understands. This is called tawriya. Tawriya असल में वर्रा युवर्री तौरियतन मीन्स छुपाना. तो अपनी हकीकत को छुपाएं, कुछ और जाहिर करें. नाउ इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग में कहीं जाना चाहते तो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन न बताते, क्योंकि मदीना में मुनाफिक बहुत थे. उनको पता चल जाए तो वो उस जगह स्पाइंग करके इंटेलिजेंस भेज दें. तो अगर मिसाल के तौर पर जाना है बर्मिंघम और बर्मिंघम लंदन की जिहत में है, तो कहते कि हम लंदन की तरफ जा रहे हैं, ताकि सबका जहन लंदन 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 की तरफ रहे, हालांकि वो आर्मी जा रही है बर्मिंघम. फिर रास्ते में बताते कि हमको यहाँ जाना है. तो ये तौरिया कहला. इसमें झूठ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या कहा, लंदन की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं कहा लंदन जा रहे हैं, हम लंदन की तरफ जा रहे हैं. तो मुखातब ये समझा कि लंदन, मगर मुतकल्लिम जानता है कि हम तो सिर्फ लंदन के डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इसमें रियल झूठ नहीं है, सही बात है, लेकिन अपने इरादे को छुपाना है. और इस ज़माने में बेहतर ये है कि अपने इरादों को छुपाएं, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज न करें. इसलिए कि हासिदीन बहुत हैं, चुगलखोर बहुत हैं, मुनाफिक बहुत हैं, हिपोक्रिट्स बहुत हैं. कोई हमारा भला नहीं चाहता, सब बुरा चाहते हैं. इसलिए इस ज़माने में हमें अपने आप की खुद हिफाजत करनी चाहिए. एक हदीस में है भी, इस्तईनु अला हवाइजिकुम बिल कितमान फ़इन्न कुल्ल ज़ी निअमतिन महसूद. अपनी हाजत पूरी करने के लिए मदद हासिल करो छुपा कर, इसलिए कि हर नेमत वाला महसूद होता है, हसद की जाती है उससे. एनीवे, तो क्या कहा, फिर से ऊपर से पढ़ो. वल अहवतु, इसमें ज़्यादा एहतियात इन सब बातों में यह है कि तौरिया करें. तौरिया के माना ये है कि अपने अल्फाज से एक सही मकसूद का इंटेंशन करे और वो उसमें झूठा भी नहीं है अपनी तरफ निस्बत करते हुए, अगरचे ज़ाहिर लफ्ज़ में वो झूठ बोल रहा हो और बिन्निस्बती इला मा यफ़हमुल मुखातब वो झूठ बोल रहा हो. अरे मुखातब बाद में चले तो कहे कि यार आपने तो कहा था लंदन जा रहे हैं ना, आप तो बर्मिंघम की तरफ निकल गए. कहाँ, तो लंदन की तरफ ही है ना बर्मिंघम, मैंने कब झूठ बोला, मैंने तो सही बात कही. इसको कहते हैं तौरिया. जान कभी ज़रूरत पड़े तो तौरिया करना अच्छा है. वलौ तरकत तौरियत व अतलक़ इबारत अल-किज़्ब फ़लैसा बिहरामिन फ़ी हाज़ल हाल. If a person left tawriya and used the lie, then in this condition it's not haram, because you need to protect yourself. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Ulama took dalil for jawaz of kizb in this halat by the hadith of Kulthum radiyallahu anha, that she heard Rasulullah sallallahu alayhi wasallam say, ليس الكذاب الذي يصرح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. That person is not a liar who makes peace among people, who promotes good or says good. زاد مسلم في رواية قالت كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث. I have not heard him
permitting in anything of what people say except in three situations. يعني الحرب in war, والإصلاح بين الناس to make peace between people, وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها, and a man speaking to his wife and a woman speaking to her husband, meaning in order to save their marriage, not on daily basis. डेली बेसिस में झूठ नहीं बोलना चाहिए मियाँ बीवी को एक दूसरे के सामने. ये तो मैरिज इज हिटिंग द रॉक्स. इन ऑर्डर टू सेव द मैरिज दे हैव टू टेल अ लाई. तो दिस इज गुड, भाई सेव योर मैरिज. तलाक क्यों करते हो? तलाक इज बैड. तो उसके लिए झूठ बोलने की इजाज़त दी है, वरना नहीं. इस्लाह बैन अन्नास, अब काशिफ भाई और नसीर भाई में लड़ाई होगी तो इमरान भाई कहते हैं अरे काशिफ भाई आप क्यों उसके नाराज़ हैं यार, वो तो आपकी तारीफ कर रहे थे. और नसीर भाई को कहें आप क्यों नाराज़ हैं यार, काशिफ भाई तो आपकी तारीफ कर रहे थे, वो तो ऐसा नहीं कह रहे थे. हालांकि उन्होंने ये बात नहीं कही थी. इमरान भाई तो उसमें ज़रा थोड़ा सा मिला दिया है, उसमें कुछ मिर्च मसाला, तो उससे भी अच्छा वो ऐसा कहा. ओह सारी यार मेरी गलत फहमी थी. दोनों को फिर गले लगा दिया, मोहब्बत करा दी, दोस्ती करा दी. तो ये जायज़ है. इसमें उनको सवाब भी मिलेगा इमरान भाई को, क्योंकि ये इस्लाह बैन अन्नास जो है ये ज़रूरी है. और दूसरा लड़ाई तो है ही इसका नाम. अल हर्ब खराअतुन, वॉरफेयर इज टू डिसीव द ऑपोजिशन. तो उसमें तो यू हैव टू, अदरवाइज यू गोना गेट किल्ड. टू सेव योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ योर सोल्जर्स समटाइम्स यू हैव टू टेल अ लाई. यू नो, जैसे अभी कहा ना कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आर्मी जो है यहाँ जा रही है, हालांकि वो जा रही है दूसरी तरफ, लेकिन वो भी उसी तरफ है. तो यूं बोल करके उसको मुराद लिया. तो ये यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज यू कैन विन. चर्चिल जो है उसने हिटलर के सामने लड़ाई ऐसी ही जीती थी. उसने हिटलर को कहा कि हम जर्मनी की फुना तरफ फौजें भेज रहे हैं, और उस तरफ थोड़ी हरकत कर दी उसने. अब हिटलर को इंटेलिजेंस वालों ने इधर जो स्पाइज थे उन्होंने कह दिया कि भाई इधर तो ये मशवरा हुआ है और उधर फौज जा रही है. तो उसने थोड़ी बहुत फौज उधर भेजी थी. अब हिटलर ने जब अपनी फौज उधर हटाई, चर्चिल को इधर पता चला कि फौज उधर चली गई, तो सारी फौज तो इधर से हमला कर दिया और उसको शिकस्त दे दी. तो ये तो लड़ाई में तो करना पड़ता है. वो तो धोखा नाम है, धोखे से लड़ाई जीती जाती है. तो उसमें गुंजाइश दी है, वरना नहीं. देखो इमाम नववी सब उससे क्या समझ में है आपको कि किज़्ब का मसला बड़ा टेढ़ा है. इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अंडर सर्टन कंडीशंस. बहुत उसमें प्रॉब्लम कंडीशंस के साथ उसकी इजाज़त दी जाती है. समझ में आ गया? इसलिए बीबीसी वाले बड़े बदमाश हैं. उन्होंने कहा कि वो तक़िया करते हैं शिया, तो सुन्नी भी तो तक़िया करते हैं. हालांकि शियों का जो तक़िया है वो तो हर बात में तक़िया है. वो तो हर बात में झूठ बोलते हैं. वो अपने मज़हब में झूठ में, उनका तो मज़हब ही झूठ पर बेस्ड है. तो उस तक़िये को इससे कुछ लेना देना नहीं है. ये तो एक्सट्रीम कंडीशन में कभी कोई गलत बयानी कर दी उसकी इजाज़त है, वरना इजाज़त नहीं है झूठ की. तो ये लोग ऐसा करते हैं लोगों को बहकाने के लिए. कहते हैं शिये भी तक़िया करते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं, मुसलमान भी झूठ बोलते हैं. इस्लाम में झूठ बोलना अलाउ है, हालांकि इसमें झूठ बोलना अलाउ नहीं है. झूठ बोलना हराम है. ये तो जान बचाने के लिए है. इसीलिए मैंने कहा ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने झूठ बोलें कब? मैरिज बचाने के लिए. ऐसा नहीं कि वो रोज़ रोज़ झूठ बोलते रहे. एक आदमी था, अध कचरा मौलवी था, पूरा नहीं था, बेचारा कच्चा था. तो शादी हुई और रोज़ उसकी बीवी के सामने हर बात झूठ बोले. तो हर चीज़ में झूठ 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 झूठ. बीवी के सामने झूठ बोलना जायज़ है? और तेरी बीवी के सामने झूठ बोलना जायज़ नहीं है कि रोज़ रोज़ थोड़ी झूठ बोलना जायज़. बीवी के सामने जायज़ है ना. आखिर वो हर चीज़ में वो उसमें वो बेचारी बीवी उसकी भोली भाली थी. वो गैरेज में गाड़ी लेकर गया, तो गैरेज वाले वो सीट ख़राब ना हो जाए उस पर प्लास्टिक चढ़ा देते हैं. फिर उस पर बैठते हैं, फिर वो चाबी मारते हैं, फिर चेक करते हैं. तो उस सीट पर वो प्लास्टिक चढ़ा हुआ था, वो लेकर गाड़ी लेकर आया. वाइफ ने पूछा कि ये क्या है? तो कहने कि नई सीट डाल दी है. वो पुरानी सीट निकाल दी और नई सीट डाली. भाई भोली भाली बेचारी समझ गई सच बोल रहे, और वो इसमें भी झूठ. तो बताया नहीं कि मैं तो जोक कर रहा था. वो बेचारी वही सच्ची समझती थी कि नई सीट डाली है. तो जो उसको ऐसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाए,
तो उसकी फिर तलाक हो गई। सचमुच उसकी बीवी ने कहा आई कांट ट्रस्ट हिम, ही इज ऑलवेज लाइंग, हर बात में झूठ। तो ये नहीं, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है भाई। ये तो एक्सट्रीम कंडीशन में अपनी मैरिज बचाने के लिए, चलो ठीक है। आगे चलिए, नहीं पढ़ाऊंगा आगे, रात को सोया नहीं हूँ यार, बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ा, 3 दफे उठा, नींद खराब हो गई। बाबुल हस्सी अला तसब्बुत फीमा यक़ूलु, यह हकी है। अस्सलाम वालेकुम।